Hi everyone, welcome to today's video. So recently I did a poll on my YouTube member community and I asked the community that should I be making riskier topics like futures and options, micro cap investing, small cap, mid cap investing, IPOs, and overwhelming majority voted yes. 76% people said yes, approximately 21,000 votes as I'm seeing as of now. So in that spirit, today I will make a video on IPO investing. I will take you through an entire risk mitigation framework on how to analyze an IPO properly. This is not a stock recommendation video कि आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए. Half of the people who watch the videos are just here for stock recommendation. Please don't behave in that way. Please learn how to invest. You are putting your hard-earned money. So I'm going to honestly explain you the entire framework. I also put my money in slightly riskier instruments. For example, मैं FNO करता हूँ. Yes, I do it from hedging perspective, not FNO trading perspective. Do I invest in micro caps? Yes, I do. IPOs do I buy? Seldomly. If the IPO is good, I will buy. And अब आप पूछोगे कि यार ऐसा क्यों कि why does it make sense to invest in IPO or invest in micro caps or do FNO, all this stuff. So today we are going to cover the story of IPOs and subsequently I will continue this series of analyzing slightly higher risk instruments. For example, I will show you Mrs. Bector IPO. So here the company got listed at 594 rupees and it made a high of 1327 rupees within couple of years. So बहुत अच्छे returns दिए. Similarly, a lot of IPOs are there that have given multi-bagger returns, so to say. So IPO investing is rewarding कि अगर आपको पैसा double triple करना है, so it helps, right? And therefore a lot of investors get attracted towards it. Similarly, small cap, mid cap में पैसा बहुत जल्दी double triple हो जाता है. Similarly, micro cap में तो और भी जल्दी double triple हो जाता है. So the point is that this space is very thrilling, but it also means that it comes with risk. So on this video, I'm going to help you understand the entire IPO game, that how do you go about researching an IPO, what are the tools, techniques that you can use, what are some salient points that you should keep in mind. So उस context में I'm making a video. Please understand the framework. That is the most important point. I will take a few names here and there, but please do not consider it as a stock buying recommendation or something, right? So that's my simple humble request and let's get started. So first key thing is that you will naturally think कि अच्छा IPO आने वाला है. How do I figure out where to find IPOs कि कौन से आने वाले हैं? So you go on this website called as Chittorgarh, right? And here you can take a look at what are the upcoming IPOs in India this week. So you'll see that Nova Agritech IPO is there, RK Swami is there, Brisk Technovision is there, वगैरह वगैरह. तो ये आपको सारे IPO की लिस्ट मिल जाएगी. Similarly, अभी कौन से IPOs एक्टिव हैं तो ये दुनिया भर की लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हो. In the year 2024, which are the IPOs that are about to come? So इसकी भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. Then आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो and there are 7-8 points that you need to remember. So let me take you through all those 7-8 points in very simple, easy to understand language. Please यार like button दबा देना so that these type of fundamental videos reach out to more investors. That is the goal of making these type of videos, that retail investors become more educated. ये stock recommendation channel नहीं है, okay? So on that spirit, let us pick like an IPO from here that we can possibly go and analyze. So let's say कि यार अब ये IPOs आने वाले हैं and आपको लगा कि चलो यार इस पे रिसर्च करते हैं. Nova Agritech ये पहला वाला. So you can go and read more about it. So आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, right? And now issue क्या होता है कि whenever an IPO is about to be launched, before that, much before that, so they do something called a DRHP filings with the SEBI, जिसमें सारा अपना डेटा बताते हैं कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल डे था and all that stuff, and you can find this entire गट्ठा, entire detailed information. So for example, if you are analyzing Nova Agritech, you can type out DRHP Nova Agritech, okay, and then you will see this SEBI website. You can go and check. अब भाई साहब यहाँ पे 443 पेजेस की रिपोर्ट आ गई. Now you can go and read this 443 pages worth of report. अब 90% people watching this video would not have the time to go and read this 5-hour report, so to say. बहुत टाइम लग जाएगा, आपका सिर खप जाएगा. तो now what are some salient points that you should find out, और at least ये 7-8 points के बारे में आपको clarity हो. So what are those 7-8 points? And मैं कह के थक गया, this is not a stock recommendation video, this is an analysis study, okay? So the first critical point that I will keep in mind is the market situation in which the IPO is getting launched and how hyped the IPO is, okay? So होता क्या है कि जब अच्छा मार्केट चल रहा होता है तो बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओ निकालती हैं. सो टाटा टेक, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू. सो आईपीओ ओपन यहाँ पे हुआ नवंबर में 1300 रुपीज के आसपास. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 1100 रुपीज. सो इस पे थोड़ा सा नुकसान चल रहा है लोगों का 15-20% का. नाउ द थिंग वाज दैट टाटा टेक आईपीओ के बारे में आपने हर जगह सुना होगा. सो इट वाज ओवर हाइप्ड इन एन ओवर वैल्यूड मार्केट, सो टू से. सो द आईपीओ टाइमिंग एंड द हाइप अराउंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो टिपिकली व्हाट आई हैव सीन इज दैट सी व्हेन द आईपीओ इज लॉन्च्ड इन अ गुड मार्केट, आई एम नॉट सेइंग यूफोरिक मार्केट, आई एम जस्ट सेइंग गुड मार्केट, जिससे पहले यूफोरिया आने वाला होता है, दैट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. इनफैक्ट आप यूफोरिया में भी इन्वेस्ट कर दोगे. सो फ्रॉम अ मार्केट टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स अ गुड
kind of an IPO, so to say. But the important point is that the hype around that company should not be very high. क्योंकि अगर hype बहुत ज़्यादा है, then technically it is seen that IPO नीचे ही जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, right? जैसा टाटा टेक के केस में हुआ. So let me share 1 or 2 more case studies here. So जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आप देख लो, ये अगस्त में था, right? इसे थोड़ा सा ऊपर गया and then it started falling quite aggressively. So अभी ये आसपास sideways movement इसका चल रहा है. But Jio Finance was launched in a decent market. That's good news, but it was an overhyped IPO. So हमेशा आप hype से बच के रहो. So for example यहाँ पे if we are doing again coming back to the company that we were analyzing, जैसे Nova Agritech Limited का अपन analyze कर रहे हैं, just figure out, just Google Nova Tech IPO and see कि कितना hype चली हुई है इसके बारे में. So that will give you a sense whether that particular IPO is overhyped or not. So this is literally step 1. Now the second key point that you need to study about the IPO that you're considering investing in is how does the company make money. इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. If the business model right now is not very clear to you, but you feel कि अच्छा आगे चल के business model will become clearer and you have a sense that how the company is going to make money, then you could possibly consider investing in that IPO. If you have no clue what the company is doing, how strong the industry is, then please do not touch such a company. So let me give you a couple of examples. So for example, if we consider Jio Financials. Now Jio Financials में at the time of IPO launch, it was not clear what business the company is going to do in the future. कुछ था ही नहीं business per se, right? But everyone understands कि अच्छा यार अंबानी जी हैं, so he will be able to build some company around it. AMCs लॉन्च कर देंगे, इंश्योरेंस बिजनेस लॉन्च कर देंगे वगैरह वगैरह. सो बेसिक आइडिया वॉज देयर. ओके, सो ऑफकोर्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्लाइटली न्यूअर कंपनी, जियो फाइनेंस तो एकदम ही नहीं थी. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्लाइटली न्यूअर कंपनी, नॉट हैविंग बिजनेस क्लैरिटी अबाउट इट्स करंट बिजनेस इज ओके, बट यू शुड हैव अ सेंस वेयर द बिजनेस इज गोइंग और वेयर द मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द कंपनी. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट ऑन द फ्लिप साइड, इफ यू टेक अ लुक एट समथिंग लाइक नाइका, राइट, सो दिस इज FSN ई-कॉमर्स. आप देखोगे कि IPO खुला था 393 पे, इसके बट्टे बैठ गए 170, राइट. सो इट हैज बीन क्रश्ड इनटू हाफ और मोर देन हाफ in roughly like 2.5 years. Why? Because this was a loss-making company. You can see that the net losses were there in the company at almost at the time. ज़बरदस्ती इसको profitable करा गया था and all that stuff. So all those things are happening. So you should be careful if you're not sure how the company is going to make money. And if the profit margins in that industry is not high or the company does not have any kind of moat, so avoid करो, right? So now you will say कि अच्छा यार ये तो आप अब दिखा रहे हो data, right? In 2022, 2023 आसपास we are getting the data because it is a listed company. But at the time of analyzing the company to invest in an IPO, उस समय तो इतनी information ही नहीं होती. How do we get information? So again you have to go on DRHP and they will give you some financial data around it. And we have to assume that the financial data presented is correct. So यहाँ पे if you take a look at Nova Agritech, you can see that the revenues from operations have been 160 crores in 2021, then 185, then 210. ये 6 मंथ की परफॉर्मेंस है, आई थिंक 6-8 मंथ्स की परफॉर्मेंस. So it's 103. Is the company profitable? Yes. Is the ROCE high? Yes. So इससे आइडिया लग रहा है that the company is profitable. So that's part 1. Part 2 is that you have to understand that what the company does in order to make money. So इसमें आपको highlights मिल जाते हैं. So Axis Bank, for example, did a coverage of this particular company and they have consolidated the points. So by reading and understanding more about the business, what the business is, you will get an idea of how the company is making money. For example, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो कंपनी है, it has been in operation since 2007. So try to get more data that how the financial performance of the company is. Google मार के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा. Then what type of products does it sell? So it sells soil health management, crop nutrition, biostimulant, biopesticide, pest management product, new technologies, crop protection. अब जैसे new technologies आ गया, तो then you should Google further. अच्छा, what type of new technology? So for example, I took a look, I studied the company more, and they are into drone making. And drone making जैसे अगर आप agricultural products के लिए देखो तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में बड़े बड़े खेत होते हैं, राइट. सो वहाँ पे वो ड्रोन्स के थ्रू दे आर एबल टू मॉनिटर द क्रॉप. सो बाय एग्रीगेटिंग एंड यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस. सो इंडिया में भी आगे चल के ऐसा होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ फार्मलैंड इज गेटिंग कंसोलिडेटेड. अभी तक तो ये हो रहा था कि अलग अलग हो रहे थे, बट एज मोर बिग कंपनीज आर कमिंग इनटू एग्रीकल्चर इन इंडिया, they will consolidate all this and they might start using drones and better technology in order to manage monitor crops. And फिर इस तरीके से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि अच्छा किस तरीके के प्रोडक्ट्स में है. So आपको क्लियर आइडिया लग रहा है that okay, this is an agri sector and they are doing end-to-end management. So आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि this company is into crop management and they are using some kind of technology also. Now the next part for you, or next homework for you is to figure out what is the moat of the company. Now moat means competitive winning advantage. For example, अगर मैं आपसे मोट पूछूं
Zomato ka. So what is the moat of Zomato? Well, it's the brand, that it has a very, very strong brand. Now, if I ask you that what is the moat of Apple products? Well, the moat again is brand, because they are able to price the product really, really high, right? So वो कंपनी की मोट हो गई. Zomato का ये बोल सकते हो क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ मोट. सो इस तरीके के कुछ ना कुछ आपको विनिंग एडवांटेज दिखता है किसी कंपनी में. सो नाउ आइडेंटिफाइंग द मोट ऑफ एन IPO इज रियली रियली टफ. आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बट यू नीड टू हैव अ विजन, यू नीड टू हैव अ थीसिस. फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी का अगर आप और स्टडी करोगे तो आई ट्राई टू डू दैट, एंड मेरे को क्या लगा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रॉप मैनेजमेंट एंड टू एंड कंपनी. इट इज अ स्मॉल कैप प्लेयर, राइट, एंड इट्स मोट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई स्मॉल कैप is unable to turn into mid cap or large cap is that they are unable to survive in the market for the next 5 years. So ये इनकी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है. So आपको यहाँ पे मिलेगा that the last year ROC or return on capital employed is 27%. Now this was fairly high. There will be fluctuation of ROC when it comes to small companies, but typically एक अच्छी कंपनी का ROC is more than 12%. The reason why 12% is that because the cost of capital in India is roughly 12%. So if some company has consistently maintained above 12%, तो ऐसा नहीं है कि वो डिब्बा हो जाएगी एकदम. So again, not a stock recommendation. I am just simply picking this as an example of a small cap company so that I can make a point. So this is the third key thing, that you should have a very clear idea about the moat of the company. Now moat of the company here also seems to be that they are into tech, they are launching better products, जैसे ड्रोन वगैरह हो गया, end to end facility है. There will be a lot of cross collaboration और cross selling, कि जैसे कोई आपसे पेस्टिसाइड खरीदता है तो उसके बाद यार आपको ड्रोन मैनेजमेंट सर्विस देनी है तो वो भी हो जाएगा, आपको क्रॉप मैनेजमेंट करवानी है तो वो भी हो जाएगा. So there is a lot of cross selling opportunity when it comes to this company. Now फिर fourth point आता है कि at what price you are getting that IPO. Now this is a very, very important aspect of IPO, because many of the IPOs in the past have been launched at crazy valuation, and if you are buying something at crazy prices, you're never going to make money in it. So how can you check? Number one, you can check the PE ratio of the company, and you can check the PE ratio of that industry. For example, अगर IT का PE is 25 and the company's PE is let's say 10, then the company is likely to be undervalued as long as it is depicting growth, right? So that is one assessment of this situation. So उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री पी एंड द कंपनी पी, एंड ये डेटा आपको बहुत आराम से मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट गूगल पी रेशियो ऑफ जोमेटो एट द टाइम ऑफ IPO लॉन्च, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई हैव गूगल्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू फाइंड, दैट द पी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 12.5, इंडस्ट्री पी इज 25.64, एंड एग्रीकल्चरल के हिसाब से दिस इज अ सेंसिबल डेटा. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि हु द अंडर राइटर ऑफ एन IPO इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कई बार बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके अंडर राइट दी इंडियन IPO एंड देन दे जस्ट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. सो आपको अंडर राइटर भी देख लेना चाहिए कि हु इज द अंडर राइटर ऑफ अ पर्टिकुलर IPO. सो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा ऊल जलूल प्राइजेस पे तो नहीं मिल रहा है. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट असेसमेंट. कैन यू 100% वैलिडेट कि यार दिस इज द राइट प्राइस ऑफ द IPO? यू कैन नॉट. देयर इज अ डिग्री ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग, एंड तभी तो पैसा डबल ट्रिपल होता है. इफ यू आर बाइंग अ श्योर शॉर्ट बेट, देन मनी विल नॉट डबल ट्रिपल, इट विल ग्रो एट लाइक 15-20% का अगर. दैट इज द करेक्ट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू हैव. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू डिसफर इज दैट आर देयर any apparent red flags. Now red flags का मतलब क्या होता है? Red flags मतलब कि आपको दिख रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यार, कि जैसे promoters are bad or some kind of funny game is happening, that they are bringing this IPO just so that existing investors can find an exit. So उसके लिए आपको concept समझना पड़ता है, and उस concept को बोलते हैं offer for sale versus fresh security issue or fresh issue. Now offer for sale means that the existing set of stakeholders in the company, from the moment it is going from private to public, जिसको IPO process बोला जाता है, that a privately listed company is now becoming public. So that process is called as an IPO process. इसमें क्या होता है कि अगर private company में existing shareholders होंगे, right? Now if they are selling their own stake, then that process is called as offer for sale, that existing shareholders are selling their stake. Fresh issue means that more equity is being added to the entire company. So आप यहाँ से technical definition भी पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी. Now it is very, very important to go and read why the company is issuing the IPO. Is it for offer for sale or is it for fresh issue, and what are they going to do with the money? So यहाँ पे मैंने आपके लिए DRHP से निकाल रखा है, you can go and read it, वरना you can go and read that 450 page document that I was speaking about, and वहाँ से आपको ये information parse out
आउट करनी पड़ती है एंड यू वुड हैव टू पिक दिस इन्फॉर्मेशन एंड मेक अ सेंस. एडिशनली अदर रेड फ्लैग्स वुड बी कि यार ऑफर फॉर सेल हो रहा है लेकिन जो बिग स्टेक होल्डर्स हैं दे आर एग्जिटिंग एंड नो अदर बिग स्टेक होल्डर्स आर बाइंग. सो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि QIB कितने स्टॉक्स खरीद रहा है. दीज आर एंकर्ड इन्वेस्टर्स. HNIs कितने स्टॉक्स खरीद रहे हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर्स कितने स्टॉक्स खरीद रहे हैं. राइट. सो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2.25 के आसपास है QIB प्लस HNI एंड रिटेल इज 1.22. सो इट्स लाइक 66% एंड 33%. सो ऐसा उल्टा रेशियो नहीं होना चाहिए कि 70-80% इज बीइंग बॉट बाय स्मॉल प्लेयर्स एंड ओनली बिग players are buying 30% of whatever the new equity is coming. Next point that you need to understand is the concept of tailwind. So tailwind का मतलब ऐसा होता है कि यार जैसे for example IPO आया, right? So now that company has been recently listed. Now are there any supporting factors that will push the stock price or push the growth of the company fast? Because once it gets public trust, देन उसका PE एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है. राइट. सो यू शुड लुक एट टेलविंड फैक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल बजट आने वाला है एंड यूजुअली होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत राहत दी जाती है. सो इट माइट हैपन दैट दीज टाइप ऑफ कंपनीज माइट डू वेल. नाउ दैट इज अ न्यूज बेस्ड प्ले. ऑन टॉप ऑफ दिस देयर कैन बी एडिशनल टेलविंड्स. फॉर एग्जांपल जेन्युइनली ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन इंडिया. क्रेडिट डिसबर्समेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज हाई. सो आपको इस तरीके के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे गिवन द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी. सो विच एवर IPO यू आर लुकिंग टू एनालाइज, लुक एट दीज टाइप ऑफ टेलविंड्स. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे देखना पड़ता है. यार देखो अब देर इज नो वे दैट यू कैन फिगर आउट और यू और आई कैन फिगर आउट दैट वेदर द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट इज गुड और बैड. You can just do an assessment and I would rather do what I will simply do is that I will look at the name of managing director, partners, जो भी leaders होंगे company पे, just go and Google their past work. For example, Mr. Vaidyanathan, who runs IDFC First Bank, he was able to grow IDFC First Bank really fast. Why? One of the core reasons was that he actually was an architect in terms of building the ICICI Bank also. So he had relevant experience in that particular industry and he used that experience to grow the bank that he is currently now leading. So इस तरीके की लीडरशिप आपको मिल जाए किसी IPO में, so then probably your chances of success in that IPO is fairly high. So similarly इसी तरीके का आप एनालिसिस कर सकते हो. अगेन ये आपको DRHP पे मिल जाएगा, आप जाके पढ़ लो आराम से. आपको यकीन हो तो देख लेना. Then comes the final point that see entire IPO investing or investing in this particular IPO or investing in some other IPO, it really comes down to your investment style and investment thesis. Just because I'm speaking about it or some other person is speaking about some stock does not mean that you go and buy that stock. Again, this entire framework, I hope that you will note it down that what are the steps involved. You will take every IPO that you are looking to invest in, take that through that lens and then make your decision of buying or not buying that. This is a framework explanation. So this is the framework that I use. Now, if you feel ki you know what, this framework is good enough for me, I can go and change it a little bit and apply it to my investing style, definitely go and do that. I would encourage you to do that. You should understand different contrarian viewpoints about a particular topic and then reach your own conclusion. That is extremely important. That is called as doing fundamental style of investing. I teach this on my YouTube member community also. In case you guys are interested, I will write a post on micro cap investing tomorrow. I will explain you more details about what micro cap investing is, give you fundamental knowledge around it, so that जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हो आप अपने खुद के कॉन्फिडेंस से खरीद पाओ. That is the entire goal of me teaching. I hope that you enjoyed this video. If you did, do press the like button and I will see you soon.